चलिए, तो मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। लेट्स गेट गोइंग। तो चलिए, आज सैटरडे का दिन है, तो सैटरडे को हम लोग वी डू टू वर्ड्स। तो दो दो वर्ड सुनाइए, फिर हम लोग कुछ इडियम्स करेंगे। अगर और बच्चे नहीं आते तो जल्दी खत्म कर लेंगे। आप लोग का जल्दी छुट्टी, मेरा भी जल्दी छुट्टी है कि नहीं? तो चलिए, शेयर कीजिए दो दो वर्ड। जो लोग रेडी हैं, अंकित, प्रिया और आलोक। बोलिए प्रिया। Today my two words are हम्म। journey and near. हम्म। My first word is journey. हम्म। The journey to the city was long. हम्म। A long journey across the country. हम्म। Our journey was to be by train. हम्म। Thank you being part of my journey. हम्म। Life is a journey. थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय जर्नी। हम्म। Okay, sir. हम्म। We went on the journey to the park. हम्म। And my second word, near. हम्म। There is a big park near my school. हम्म। I run across an old friend near the bank. हम्म। I don't want you to stay near to me. हम्म। She lives near the beach. बीच। हम्म। There is a hospital near here. हम्म। The train station is near the city center. हम्म। We are getting near the finish line. हम्म। That's all, sir. बहुत बढ़िया बेटा। Thank you. नहीं, आपका सेंटेंस भी अच्छा था। आपने बहुत धीरे धीरे अच्छे से सोच सोच के बोला, विच इज वेरी नाइस। बहुत बढ़िया बेटा। लेट्स गो टू आलोक। आलोक बोलिए भाई। So, sir, my two words are deceive and truth. पहला वर्ड क्या था? Deceive means धोखा धोखा देना। देना. हम्म। Hmm. Uh, so here are a few sentences regarding this word. हम्म। Mm, I was deceived by him in my previous battle. हम्म। He deceived me during examination. हम्म। He deceives everyone. हम्म। It's like his passion. हम्म। And sir, my second word is truth. हम्म। Mm, Tell me the truth about him. हम्म। Uh, to tell you the truth, I have no idea. हम्म। She found out the truth about him. हम्म। That's all. बहुत बढ़िया। ओके, चलते हैं अंकित के पास। बोलिए अंकित। Hello, sir. लो बेटा। Today's my two words are confidence हम्म। and concentration. कंसंट्रेशन। हम्म। My first word is confidence. That sentences are she has great confidence.
बोलिए अंकित, आपकी आवाज आनी बंद हो गई। अंकित, आपको मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। ओके ओके, चलिए तब तक चलते हैं क्रिस के पास। क्रिस और वीर, बोलिए भाई। Yes, sir. Today, my two words are approach and dismay. My first word is dismay. He is dismayed in front of his boss. He was this way in day of his result. The the bright student never dismay to ask question to teachers. हम्म So my second word is approach. My sentences are he succeeded because he approached well. He did not succeed because he did not approach well. हम्म And to become and wrestler, you should approach hard. That's all, हम्म, sir. बहुत बढ़िया। आपके साथ वीर भी है? Yes, sir. बोलिए बेटा। Today, my two words are redolent and effigy. मीनिंग भी My बता आप। first, my first word is redolent, which means fragrance. हम्म My sentences are the soup had a great redolent. हम्म The peoples were attracted towards the bakery by the redolent of the cake. This redolent reminds me of those flowers. हम्म Redolent coming out of the kitchen was just delicious. हम्म I remember the flowers by their redolent smell. हम्म So my second word is effigy, हम्म which means mannequin. हम्म So my sentences are the effigy looks so alive. हम्म There are number of effigy displaying in the cloth showroom. क्लोज The शोरूम। artists have displayed this effigy have so much emotions in it. हम्म That's all, sir. वेरी नाइस। तो आपने रेडुलेंट और फिजी दो वर्ड नहीं सुनाए। आई होप एवरीबॉडी हर्ड वीर एंड देयर समथिंग दैट वी टेक अवे फ्रॉम दैट। ओके, चलिए अंकित, आप कंटिन्यू कीजिए। Yes, sir. Today's my two words are concentration and confidence. हम्म My first word is concentration. That sentences are she focused her concentration on her work. हम्म I need concentration to achieve my goal. हम्म He plays the game with great concentration. हम्म I concentrated on my studies to get good grades. हम्म She worked with concentration to build her business. बिल्ड बिजनेस। I require concentration to succeed in life. हम्म He works with concentration to achieve his objectives. हम्म I played the game with concentration and won. हम्म The second word is confidence. That sentences are she has confidence in her abilities. हम्म I need confidence to achieve my goals. हम्म He plays a sport with confidence. हम्म I study with confidence for the exam. हम्म She runs her business with confidence. हम्म I require confidence to succeed in life. हम्म I need confidence to public speak effectively. हाँ, टू स्पीक, टू effectively speak publicly, or I need confidence for public speaking. Both word। बोलिए। That's also thank you. बहुत बढ़िया। देखिए सेंटेंसेस भी सबका अच्छे से बन के आ रहा है, एंड आई कुड हियर एवरीबॉडी लाउड एंड क्लियर। तो अभी मुझे नहीं पता है कि भाई बच्चे आज क्लास में कम क्यों हैं। मे बी बिकॉज आई एम नॉट अ ग्रेट टीचर। हो सकता है उनको सबको लगा करे आलतू फालतू टीचर के साथ क्यों टाइम खराब करना है, वो भी हो सकता है।
तो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, या फिर सब कोई बिजी है किसी और चीज में, कोई एग्जाम वगैरह चल रहा है या पता नहीं, तो लेट्स सी। लेकिन मेरा मेरा आप लोगों को कमिटमेंट यही है कि क्लास में अगर एक भी बच्चा रहेगा तो क्लास होगा, है ना। तो अ, अगर अगर लगे कि हाँ इस टीचर के साथ टाइम खराब कर सकते हैं तो बेझिझक आइए। अगर लगे कि टीचर टाइम पास कर रहा है तो ऑब्वियसली योर करियर, योर फ्यूचर इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पेंडिंग टाइम विथ मी, तो आई विल नॉट फोर्स एनीबडी। तो लेट्स डू वन थिंग। Next 10 minutes we will look at some of the idioms and देखते हैं कि भाई उस idiom से हम लोग क्या sentences बना सकते हैं, and then probably I'll let you guys go little early today, not little early, lot earlier, क्योंकि कम बच्चे रहेंगे तो आप ही लोग को दो दो वर्ड कितना सुनाएंगे, है कि नहीं। तो a word, an idiom that we want to practice. I mean, there are two idioms that I want to kind of share with you guys. One is on cloud nine. When you say, I mean, it on cloud nine represents a situation when you are feeling extremely happy about something, very extreme. I mean, extremely happy, joyful, or you have a sense of achievement. When somebody says I'm on cloud nine, मतलब समझिए कि वो बहुत ज्यादा खुश है, चाहे वो नौकरी मिलने से हो, चाहे वो कोई ऐसी खुशी मिली हो जो जो उसको जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हो, या मतलब ही इज ओवरजॉयड, ठीक है, ही और शी। तो क्लाउड नाइन, सब ऑन क्लाउड नाइन is an idiom which represents extreme joy or happiness, ठीक है। Now if you have to talk about our sentences, right, as soon as you somebody heard about a job offer from a great company, he was on cloud nine. Hello Shivani. So as soon as I heard about my brother getting selected for a job, I was on cloud nine. When my research paper got selected, I was on cloud nine. When I got my tax refund, I was on cloud nine. So basically, it could be for anything. When you say on cloud nine, that simply means कि भाई बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है, आप चाहे जिस भी कारण से हो, ठीक है। So I would pause here. I would want to see if you guys want to take a punt at it and make few sentences with the idiom on cloud nine. Hello Ratik, Shivani. हेलो सर। तो आप लोग थोड़ा लेट हुए तो हमको लगा कि पता नहीं आज बच्चे लोग जो है क्लास में नहीं ज्वाइन करेगा या क्या। तो बहुत आज काफी कम लोग हैं, व्हाट आई डोंट नो व्हाट द रीजंस आर, बट वन कुड बी बिकॉज द क्लास टाइमिंग हैज चेंज ड्यू टू डेलाइट सेविंग हियर। यहाँ पे यूएस में डेलाइट सेविंग होता है तो घड़ी को 1 घंटा आगे कर देता है, तो उस चक्कर में गड़बड़ा जाता है मामला। बट एनीवेज, सो टुडे बीइंग सैटरडे हम लोग दो दो वर्ड शेयर कर रहे थे, सबने दो दो वर्ड शेयर किया। अभी शिवानी और नैतिक आप लोगों ने ज्वाइन किया, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी अपना दो वर्ड शेयर कीजिए। एंड आई हैड जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द इडियम, सो द इडियम वाज ऑन क्लाउड नाइन। तो आप लोग पहले अपना दो दो वर्ड शेयर कर दीजिए, शिवानी और नैतिक, देन विल गो टू मेकिंग सेंटेंसेस ऑन क्लाउड नाइन। तो आप लोग रेडी हैं तो अपने वर्ड शेयर कीजिए, एंड देन विल गो टू द इडियम। यस नैतिक। Good evening, sir. गुड Today's इवनिंग। my two words are revolt and हम्म excel. हम्म Sir, my first word is revolt. हम्म That some sentences are: Revolt of 1857 was the first freedom revolt of India. हम्म Independence struggle of India is a great revolt. Farmers do revolt due to progressive tax of government. हम्म The novel officer planned a revolt at sea. हम्म This film was inspired by a real life revolt. हम्म Digital रिवोल्ट होता है, revolution. रिवोल्ट। Revolt हम्म is yes, sir. हम्म The हम्म digital revolution is modern form of revolt. हम्म And so my second word is excel. That हम्म means Sresthana.
Hmm. Sentences are Ramesh is excel in his studies. Hmm. He excel in his exam and win the first prize. Won the first prize. Won. हो गया वो चीज. Yes, sir. Team Hmm. India is excel in cricket and win the World Cup once more time. One more time. He is excel in his painting. Hmm. If you work hard in your field, then you can achieve your goal. Hmm. To do excel in song, we should exercise daily. Hmm. He tried to excel in his every project. Hmm. Self confidence is very important to do excel and achieve goals. That's all, sir. Hmm. Thank you. बहुत बढ़िया. तो आपको बताते हैं हमारा इडियम था ऑन क्लाउड नाइन, जिसका मतलब होता है व्हेन यू आर वेरी हैप्पी और एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट समथिंग. ठीक है. सो I was on cloud nine when I saw all the students doing wonderful with English communication. So this is an idiom we'll come to. तो इससे पहले शिवानी को सुन लेते हैं. Then we will start with the sentences on cloud nine. Yes, शिवानी बोलिए. Good morning, sir. Good evening. Today's my two words are bend and choose. Hmm. My first word is bend. That sentences are Rohit bent down to tie his shoelace. Hmm. The tree bent due to strong wind. Wind. Hmm. Wind. Make a bend in the wire. Hmm. The van screeched round a bend. Hmm. You took that bend too fast. Hmm. They want to bend me to their will. Hmm. She can bend an iron bar with her bare hands. Hmm. Bare hands, right? That BARE. sentences are true. Hmm. That sentences are Hmm. I will stay as long as I choose. Hmm. You choose, I can't decide. Hmm. I do not want to have to choose between them. Hmm. There are many versions to choose from. Hmm. Ria can choose any book from the shelf. Hmm. Aman choose a red dress for the party. Hmm. That's all. Thank you. बहुत बढ़िया. चलिए, तो आई थिंक सबने बोल दिया है अपने दो दो वर्ड्स. लेट्स गो टू इडियम. द इडियम वाज ऑन क्लाउड नाइन. सो आलोक अपने हाथ खड़ा किया है, सो सुनाइए. So, sir, my sentences from the idiom. What was it, sir? ऑन On क्लाउड the नाइन. ऑन क्लाउड uh, नाइन. on cloud nine. Are हम्म. mm, he has been on cloud nine ever since she agreed to marry him. हम्म. Mm, Ram was on cloud nine when he got an offer to work at a big company. हम्म. He he's on a cloud nine because he got a chance to meet his favorite educator R.D. Sharma. हम्म. Mm, Ram has been on cloud nine ever since he got selected as an officer in the army. हम्म. That's all. बहुत बढ़िया. ऑल रिलेटेबल सेंटेंसेस. चलिए सुनते हैं शिवानी को भी. शिवानी बोलिए बेटा. Today idiom is on cloud nine. That हम्म. sentences are she was on cloud nine after she got her dream job. हम्म. The baby's arrival put the parents on cloud nine. हम्म.
The fans were on cloud nine after their team won the championship. Hmm. I was on cloud nine after I saw my favorite band perform. Hmm. That's all. Thank you. बहुत बढ़िया. और कोई क्लाउड नाइन पे सुनाना चाहेंगे? Okay. So again, just to repeat, on cloud nine is an idiom which represents the feeling of extreme happiness or joy. हाँ नैतिक बोलिए. The today's our first idiom is on cloud nine. Hmm. That some sentences are when anyone is on cloud nine, they are very Hmm. excited. Hmm. People feel on cloud nine when KK are going to final match. Hmm. Getting a good grade on a test can put you on a cloud nine. Hmm. Winning a game can also make someone feel on cloud nine. Hmm. If you hear good news, you Hmm. might feel on cloud nine. Hmm. That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया. नाव्या भोजन के बाद देखिए भाई. वेलकम टू द क्लास बेटा. आई एम ऑन क्लाउड Good नाइन. morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. तो देखिए क्लाउड नाइन का एकदम रियल एग्जांपल. आई एम ऑन क्लाउड नाइन वंस आई सी माय ओल्ड स्टूडेंट नाविया इन द क्लास. तो नाविया बोलिए भाई, आज क्या बोलना चाहेंगे आप? Uh, Sir, today my two words are recite and extraordinary. हम्म. So my first word is recite. It means to say aloud a piece of writing, especially a poem or a list from memory. हम्म. Whose sentences are: she could recite large quotation of Shakespeare. हम्म. She can शेक्सपियर. recite the whole poem from memory. हम्म. He closed his eyes and began to recite a Buddhist mantra. हम्म. Recite the poem from the beginning. हम्म. He loved to recite his personal experiences. हम्म. It's my turn to recite. हम्म. All he could do was recite a list of government failings. हम्म. Each student had to recite a poem. हम्म. They recite the words earnestly and proudly, हम्म. and then recite a list of all the things she resented. हम्म. And second word is extraordinary. It means unexpected. हम्म. He told the extraordinary story of his escape. हम्म. What an extraordinary things to say. हम्म. He listened in disbelief to their to this extraordinary story. हम्म. What an extraordinary idea. हम्म. It took an extraordinary amount of work. हम्म. His eating habits are extraordinary. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया बेटा. चलिए नाविया, और कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? ऑन क्लाउड नाइन पे भी कुछ शेयर करना चाहेंगे जो हमारा इडियम है आज का? नहीं. Yes, sir. नहीं नहीं, तो हम लोग क्लास में करते हैं ना कि जो दो दो वर्ड सुनाने के बाद में अगर टाइम बचता है तो जैसे पिक्चर के बीच में ऐड आता है ना, हम लोग वैसे ही ऐड करते हैं यहाँ पे इडियम्स. इडियम्स मतलब मुहावरा, अंग्रेजी का मुहावरा. तो आज हमारा इडियम है ऑन क्लाउड नाइन, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और जॉय. तो वही मैं बोला, आप जब आपको देखा क्लास में तो आपको मैंने उसको प्रैक्टिकल यूज किया सेंटेंस का. आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन व्हेन आई saw some of my previous students like Navya join the class. तो on cloud nine मतलब इट्स एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस. तो ठीक है, आप सोचिए, बनाइए सेंटेंसेस. इस बीच में व्हाट आई विल डू इज लेट मी पिक अप द नेक्स्ट इडियम दैट आई वांट यू गाइस टू कम अक्रॉस. अब ऑन क्लाउड नाइन हो गया, उसी से रिलेटेड दूसरा करते हैं ओवर द मून. दैट्स आल्सो द सेम थिंग.
चांद पे पहुंच जाना, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में कि चांद पे पहुंच गया, झाड़ी पर से उतरो, उस टाइप से झाड़ी पर ही है, समझिए कि ओवर द मून मतलब सम व्हेन समबडी इज एक्सट्रीमली डिलाइटेड और हैप्पी। जैसे ऑन क्लाउड नाइन इज मोर, I mean you can use on cloud nine or over the moon interchangeably. Both have similar magnitude of happiness. तो जैसे क्लाउड नाइन में जहां जैसे आप लोगों ने यूज किया, वहां पे उसको फाइन रिप्लेस कर सकते हैं ओवर द मून के साथ में, एंड दैट वुड वर्क टू। आई वॉज ओवर द मून when I received award from my most favorite teacher. I was over the moon when I got a good result in my exam. I was over the moon when people were praising me for my hard work. तो चलिए अब देखते हैं कौन ओवर द मून और ऑन क्लाउड नाइन के ऊपर सुनाना चाहता है सेंटेंसेस। बोलिए ना भैया। सर ओवर द मून के ऊपर बोलेंगे। बोलिए। I got the job. I am over the moon. हम्म I am over the moon right now. हम्म I have just found some money on this trace. हम्म These children were over the moon when they were given a new puppy. हम्म My sister was over the moon when she got accepted into the university she wanted to go to. हम्म And our parents will be over the moon when they find out we have bought them a new car. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। चलिए नैतिक बोलिए भाई। Good evening, sir. Today's हम्म our second sentence is over the moon. So हम्म some sentences on over the moon are: she was over the moon with her new bike. हम्म She is over the moon about her new job. हम्म They are over the moon about their trip to Japan. हम्म The whole team were over the moon at winning the competition. हम्म Female speaker: I was over the moon. हम्म I was over the moon to get your letter. हम्म The earth sometimes cast a shadow over the moon. हम्म Lucky was over the moon with her victory. हम्म That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया। चलिए शिवानी को सुनते हैं। बोलिए शिवानी। शिवानी आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। ओके, तब तक क्रिस को सुन लेते हैं। क्रिस और वीर। आवाज Today Idiom is over the moon. हम्म That sentences are I was over the moon about it. हम्म I could tell he was over the moon ecstatic. हम्म Thinks he was over the moon about it. हम्म I am over the moon about the way things have worked out. हम्म That's all. बहुत बढ़िया। मामी चलिए। हाँ क्रिस और वीर बोलिए। Yes, sir. Sir, today my idiom is over the moon. My हम्म sentences are after the result, he was over the moon. My हम्म brother got over the moon when he was awarded. हम्म That's all. बहुत बढ़िया। आलोक बोलिए भाई। yes sir. The idiom is over the moon. हम्म Here are two sentences about it. हम्म She was over the moon about her new car. हम्म There
They were over the moon about their trip to Bhutan. Hmm. The staff here are all over the moon. Hmm. Uh, uh, if I found, uh, if I find money on the ground, I Hmm. would be over the moon. Hmm. That's also. बहुत बढ़िया. So all relatable sentences सबने सुनाया ओवर द मून के बारे में. And that was um, a good recap of what we have learned. तो अच्छा था कि मतलब what I felt good as a teacher is कि you guys have come to a point where you can make sentences on the fly with whatever comes your way. And that is essentially what the communication is supposed to be, right? मतलब अगर देखा जाए कि हम लोग को अगर कभी भी बात करनी हो, कोई टॉपिक आता है, कुछ सुनने को मिलता है, आर वी एबल टू टॉक अबाउट इट विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी मेंटल ब्लॉक? अगर वो कर पाते हैं तो समझिए कि कम्युनिकेशन का 2-3 सीढ़ी पार कर चुके हैं. Now it is all about how do we polish it, how do we practice it, how do we kind of create an environment around ourselves. आप लोग सभी लोग जो अभी कुछ लोग 7th क्लास में हो, कुछ लोग 8th क्लास में, कुछ लोग 9th 10th में हो, कुछ लोग आगे की पढ़ाई कर रहे हो. Eventually you will end up doing one thing which is common across all of you is meet with people, interact with people, and use a common medium of communication. And why we are using English as a common medium of communication? Because that has no boundaries. मतलब समझिए कि एक ऐसी भाषा है जो कि आपको दुनिया में कहीं भी चले जाइए. मतलब आश्चर्य की बात यह है कि आप आज के डेट में अगर पटना में जाके बहुत लोग से कुछ लोग से बात करेंगे तो देखेंगे पीपल कीप ऑन यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स इन बिटवीन. पीपल आर मोर कॉन्फिडेंट making sentences or using English sentences in between. It's a norm. मतलब हम देखते हैं घर में जाते हैं भाई लोग से बात करते हैं तो मतलब पता चलता है कि अच्छा हर कोई इंग्लिश को उतना ही कंफर्टेबली यूज कर रहा है. सो इट्स गेटिंग मोर पॉपुलर अमंग ऑल द पीपल अक्रॉस द ग्लोब बिकॉज एवरीबडी हैज रियलाइज कि हाँ मतलब एक भाषा है जो बहुत जगह पे काम आती है. तो अब अपने मतलब क्या बोलते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी को कम क्यों करना, राइट? आप लोग जो भी करोगे कहीं ना कहीं पहुंचोगे, जहां भी पहुंचोगे वहां पे आपको एक भाषा काम आएगी, दैट इज इंग्लिश. ओके. तो आज चूंकि बच्चे कम है क्लास में तो आई विल लेट यू गाइस गो. एंड जो लोग से होली से पहले बात नहीं हुई थी उन लोग को बिलेटेड हैप्पी होली. लेकिन एक चीज है कि बच्चे थोड़ा कुछ ही बच्चे हैं जो बहुत रेगुलर रहते हैं एंड आई कैन क्लियरली सी द डिफरेंस इन दोज किड्स. अब ये बच्चे कम हो तो ये भी हो सकता है कारण कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ, ये भी हो सकता है कारण. लेकिन जो लोग हैं उनका उनका मुझे फायदा दिखता है. तो आई वुड नॉट मेक दैट ब्लैंकेट स्टेटमेंट. मतलब अभी तक मेरा कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाया है कि अच्छा हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे. ठीक है, तो पढ़ा पा रहे हैं और आई कैन सी सम डिफरेंस. तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी क्लास में आते हैं रेगुलर रहिए. जिस दिन लगे कि हाँ टीचर जो टाइम वेस्ट कर रहा है तो फिर चुपके से निकल लीजिए और क्या. लेकिन अगर ऐसा फीलिंग नहीं आया हो अभी तक तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग एक दो बच्चे को हर कोई जोड़िए. ठीक है, ताकि कुछ बच्चे रहेंगे तो देन यू विल सी द डिफरेंस. जैसे शिवानी बोलती है उससे नैतिक सीखते हैं, नैतिक बोलते बोलते हैं उससे अंकित सीखते हैं, अंकित बोलते हैं उससे क्रिस सीखते हैं, क्रिस बोलते हैं उससे और बाकी बच्चे सीखते हैं. तो आलोक बोलते हैं तो उसको देखकर सुन के तो इवेंचुअली वी आर ऑल लर्निंग फ्रॉम ईच अदर. जैसे आप लोग जब भारी भरकम वर्ड शेयर करते हो तो इवन इवन आई एंड अप लर्निंग थिंग्स बिकॉज नॉट दैट एवरीथिंग दैट इज इन इंग्लिश आई नो, राइट? मतलब हम भी सीख ही रहे हैं. तो मेरा रिक्वेस्ट वही रहेगा कि आप लोग एक दो बच्चों को एक दो फ्रेंड को जोड़िए. ठीक है, अ, अगर लगे कि टीचर ठीक है तो, अगर लगे टीचर ठीक नहीं है तो कोई बात ही नहीं है ना. चलिए तो विद दैट बीइंग सेड आई विल लेट यू गाइस गो. एंजॉय रेस्ट ऑफ योर इवनिंग. मिलते हैं कल सेम टाइम पे. रिमाइंडर फॉर यू ऑल, क्लास टाइमिंग्स हैव चेंज्ड. तो मैथ क्लासेस स्टार्ट एट 5 PM एंड इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट एट 6. क्योंकि यहाँ पे घड़ी को थोड़ा छेड़छाड़ होता है यूएस में. हर साल में 2 बार होता है, एक बार मार्च में, एक बार नवंबर में. तो मार्च में आगे बढ़ा देते हैं और नवंबर में पीछे कर देते हैं.
तो इसीलिए सॉरी वो एडजस्टमेंट हुआ है टाइप का, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। सही बच्चों ने बोल दिया, हम लोगों ने इडियम्स का प्रैक्टिस भी कर लिया, और मैंने थोड़ा बहुत आप लोग को फालतू का ज्ञान भी दे दिया, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में कल सेम टाइम पे, है ना। बाय सर। Bye, sir. बाय बाय। Bye, Bye. sir.